So guys, let's start reading. अभी 7:30 हो रहा है. I'll read for 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 and 12:30. 5 घंटा I'll read. Okay guys, जय राधा रानी. नाउ लेट्स रीड. टूलेरेमिया पढ़ रहे थे हम लोग. सो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से होता है या फिर इंसेक्ट वेक्टर जैसे कि टिक्स एंड डियर फ्लाइज से होता है. मोस्ट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री इन ह्यूमन इन्फेक्शन इज द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू एन एबरेशन और टिक बाइट. नाउ क्लिनिकल फीचर टिक बाइट का क्या होता है? इन द oculoglandular form, ulcer and nodules appear on the tarsal conjunctiva. जो कंजक्टाइवा का टार्सल साइड है वहाँ पे अल्सर और नोड्यूल होता है एसोसिएटेड विथ swelling of the peri-auricular lymph node and accompanied by constitutional symptoms जैसे कि fever, severe headache and general disability. क्या होता है उसमें? क्लिनिकल फीचर नोड्यूल्स होगा, अल्सर होगा. कहाँ पे? कंजक्टाइवा में, टार्सल कंजक्टाइवा में. और स्वेलिंग कहाँ का होगा? पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड का स्वेलिंग होगा. और फीवर, सीवियर हेडेक, जनरल डिसेबिलिटी होगा, डिबिलिटी. तो मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को? डायग्नोसिस इज मेड बाय एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है. एंड द ट्रीटमेंट इज बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम 12 आवरली फॉर 7 days एंड टॉपिकल जेंटामाइसिन ड्रॉप्स 2 आवरली for 1 week and then 4 to 6 times a day till the condition gets resolved. A physician must be consulted for control of the systemic infection. ना ऑप्थैल्मिया नोडोसा क्या होता है? ऑप्थैल्मिया नियोनेट्रम अलग होता है, ऑप्थैल्मिया अलग होता है. और ऑप्थैल्मिया नोडोसा, दिस इज अ नोड्यूलर कंजक्टिवाइटिस which may be mistaken for tuberculosis and occurs due to irritation caused by hairs of certain caterpillars. हेयर ऑफ सर्टेन कैटरपिलर से ऑप्थैल्मिया नोडोसा होता है. So basically what do we know about this? So small semi-translucent reddish yellow grey nodules are formed in the conjunctiva, cornea and sometimes in the iris. On microscopic examination, hairs surrounded by giant cell and lymphocytes are found. So the nodules in the conjunctiva should be excised. Otherwise, condition is treated on general principle. Now leprosy क्या होता है? Conjunctival involvement in leprosy is not uncommon. There may be lepromatous nodules on the eyelid and lesion in the limbus or on the cornea. Non-specific conjunctivitis may develop independently or in conjunction with hello, tour and train. So non-specific conjunctivitis may develop independently or in conjugation with facial nerve palsy and lag ophthalmos with exposure keratopathy. तो ये सब हो सकता है. लेप्रेसी में क्या होता है बेसिकली? अगर कंजक्टाइवा इन्वॉल्व हो गया तो कंजक्टाइवल वैसे इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन है, इतना कॉमन नहीं है. तो लेप्रोमैटस नोड्यूल कंजक्टाइवा में हो जाएगा, आईलिड्स में, और लिम्बस में लीजन हो जाएगा या फिर कॉर्निया में है. फिर नॉन स्पेसिफिक कंजक्टिवाइटिस डेवलप कर सकता है. फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है, लैग ऑप्थैल्मोस हो सकता है, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है लेप्रोसी में. ना ये हमारा what was this? ग्रैन्युलोमैटस कंजक्टिवाइटिस इज ओवर. सारे ग्रैन्युलोमैटस कंडीशंस हो गए हमारे. कितने सारे थे? एक था
Parinod oculoglandular syndrome. Other was cat scratch disease. Other was lymphogranuloma venerum. Then tuberculosis of the conjunctiva, syphilis, tularemia, ophthalmia nodosa, leprosy. Now let's come to fungal conjunctivitis. So fungal infection due to Aspergillus, Candida albicans, nocardia, lepthrix, spirothrix can infrequently present as chronic conjunctivitis. Follicular conjunctivitis with lymphadenopathy is one mode of presentation. Ulceration or pseudomembranous lesion may develop. Actinomyc- Actinomycosis, spirotrichosis, rhinospiridiosis are present as granulomatous conjunctivitis. ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल माइको माइकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमाजोल 1% होता है, ठीक है। माइकोनाजोल या क्लोट्रीमाजोल, क्योंकि फंगल है, सो क्लोट्रीमाजोल या माइकोनाजोल हम लोग देंगे। राइनोस्पोरिडियोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइकोटिक कंजक्टिवाइटिस caused by Rhinosporidium sebri, described from certain geographic regions such as Sri Lanka, southern India, Africa, and Central and South America. Sessile or pedunculated, freshly exophyletic granulomatous growth whose surface is irregular and covered with minute white dots are characteristic. The lesion are treated by complete surgical excision. ठीक है। Now ophthalmia neonatorum पढ़ते हैं. This is also known as neonatal conjunctivitis and is defined as mucoid, mucopurulent or purulent discharge from one or both eye. न्यूनेटरम कंजक्टिवाइटिस भी इसको कहते हैं। म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है एक या दोनों आँख से in the first month of the life. Any discharge, even a watery secretion from baby's eyes during the first week should be viewed as suspicion because कोई भी तरीके का डिस्चार्ज बेबी के आँख से अगर आ रहा है फर्स्ट वीक में, तो सस्पिशन हम लोग को ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम का ले लेना है। क्यों? बिकॉज टीयर्स आर नॉट सेक्रेटेड सो अर्ली इन द लाइफ। आँख से आंसू इतनी जल्दी नहीं आता है। बिसाइड्स ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अ चाइल्ड विथ डिस्चार्ज फ्रॉम द eyes with the first month of the life includes congenitally blocked nasolacrimal duct, acute ductocystitis, congenital glaucoma। ये 3 DD और आएगा, ठीक है। Now etiology क्या है? So source and mode of infection. It is a preventable disease occurring in a newborn child due to maternal infection acquired at the time of the birth by contamination in the birth passage। मतलब माँ के जब बर्थ हो रहा था उसका, तो माँ से कंटामिनेट होकर के ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम हो गया, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? निजेरिया गोनोरिया है। सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम इज निजेरिया गोनोरिया है। निजेरिया गोनोरिया कैसे है यार? मैंने तो ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम का लिखा था, क्लमाइडिया का लिखा था। Neisseria gonorrhea manifests the earliest, typically within the first 48 hours of birth.
अच्छा हाँ, 48 जो होता है वो निजेरिया गोनोरिया इससे भी होता है। ओके, देन क्या होता है, इन केस ऑफ विरुलेंट गोनोकोकल इन्फेक्शन the discharge rapidly becomes mucopurulent and then purulent. Both eyes are nearly always affected, with one usually worse than the other. The conjunctiva becomes intensely inflamed, bright red, and swollen. Hi, mummy. So, जो कंजक्टाइवा है वो इंटेंसली इन्फ्लेम हो जाता है, ब्राइट रेड और स्वॉलन हो जाता है, with thick yellow pus discharge. Marked chemosis यानी inflammation of the conjunctiva is a distinguishing feature from severe mucopurulent conjunctivitis. To examine the baby's eye, retractors might be needed to separate the swollen lid, and the surgeon must wear protective goggles to guard against a sudden spurt of infective material splitting out. तो सर्जन को क्या बोल रहा है, गॉगल्स पहनने. नाउ वन separation of the lids. On separation of the lids using retractor, लो साउंड. हाय मम्मी, लो साउंड आ रहा है तो पता नहीं, साउंड वाला तो ओपन है. सो ऑन सेपरेशन ऑफ द लिड्स यूजिंग रिट्रैक्टर लेकर के बच्चे का जब लिड्स को सेपरेट करेंगे इन सीवियर केसेस द कॉर्निया इज सीन एट द बॉटम ऑफ द crater like pit. There is dense infiltration of the bulbar conjunctiva. So bulbar conjunctiva में बहुत सारा dense infiltration दिखेगा and the lids are swollen and tense. Later the lid becomes softer. बाद में lid जो है वो softer हो जाएगा and more easily everted. पहले तो खुलेगा ही नहीं, तो इसलिए retractor लेके खोलेंगे तो कॉर्निया जो है द बॉटम ऑफ द क्रेटर लाइक पिट में दिखेगा. बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा कंजंक्टिवा में. देन लिड जो है स्वोलन होगा, टेंस होगा. लेटर लिड जो है सॉफ्टर हो जाएगा और मोर इजीली इवर्टेड हो जाएगा, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, मेकिंग द कंजंक्टिवा प्लग्ड एंड वेलवेटी. पकर्ड एंड वेलवेटी कंजंक्टिवा जो है. एंड द स्टैसिस ऑफ ब्लड गिव्स प्लेस टू इंटेंस कंजेशन. ब्लड वहाँ पे स्टैसिस होगा तो कंजेशन हो जाएगा विद द फ्री डिस्चार्ज ऑफ पस from so that the free discharge of pus, serum and often blood. So in some false membrane forms so that the case resembles a membranous conjunctivitis. इसमें क्या होता है, कुछ केसेस में फॉल्स मेम्ब्रेन टाइप का फॉर्म हो जाता है तो ये लगता है कि मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है, बट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में ऐसा कुछ नहीं होता है. इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलेगा, बेबी का जो आईलिड है इवर्ट करेंगे तो, और उसके बाद ब्लड पस ये सब का कंजंक्टिवा में कलेक्शन मिलेगा. देन उसके बाद जो कंजंक्टिवा है वो पकड़ और वेलवेटी हो जाएगा. सो इन सम केसेस अ फॉल्स मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाता है जो कि लगता है ऐसा कि मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस है, पर है नहीं. नोट, as gonococci have the power of invading intact epithelium. सो गोनोकोकाई का क्या होता है कि वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन को भी इन्वेड कर देता है. देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन in untreated gonococcal ophthalmia neonatum. The slightest haziness of the cornea should be viewed with apprehension. Sometimes the child under observation has already ulcerated cornea which may be perforated. Now ulceration usually occurs over an oval area
ओवर एन ओवल एरिया, सो अल्सरेशन जो है वो ओवल एरिया में होता है, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के सेंटर में ओवल एरिया में परफोरेशन हो जाता है, करस्पॉन्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द लिड मार्जिन वेयर द आईज आर क्लोज एंड कंसिक्वेंटली रोटेटेड समवट अप ऊपर अपवर्ड्स। रेयरली ओवल मार्जिनल अल्सर जो होता है are formed as in the gonorrheal conjunctivitis of adult. The ulcer tends to extend rapidly both superficially and in depth, resulting in perforation, usually manifesting clinically as a black spot. Black spot or the area in the ulcer caused by a prolapse of the iris. आइरिस भी प्रोलैप्स कर जाता है, ब्लैक डॉट की तरह होता है, नाइरिस प्रोलैप्स कर जाता है और फिर वो जो अल्सरेशन होता है उसको भर देता है, परफोरेट भी तो कर जाता है वो अल्सरेशन। सो समटाइम्स परफोरेशन इज सडन, परफोरेशन कभी कभी एकदम सडन होता है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द आइरिस प्रोलैप्सेस एंड द लेंस मे बी एक्सट्रूडेड, लेंस बाहर की तरफ भी जा सकता है। वेर एज इन वर्स्ट केसेस देयर इज अ ब्लैक होल इन द कॉर्नर फिल्ड विथ क्लियर विट्रस। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट में रिजल्ट इन सीरियस सीक्वेले इफ़ द कॉर्नियल अल्सरेशन हील्स विदाउट परफोरेशन। अगर कॉर्निया का जो अल्सरेशन है बिना परफोरेशन के हील करता है, देयर इज ऑलवेज मच स्कारिंग ऑफ द टिश्यू, स्कारिंग होगा ही होगा, बट द नेब्यूला clears more in babies than in older people. Now, perforation may be followed by anterior synechia, adherent leukoma, and partial or total anterior staphyloma, anterior capsule cataract, or panophthalmitis, when vision is not completely destroyed but seriously impaired by the corneal opacity. The development of central macular fixation, which takes place during the first 3 weeks of the life, is impaired. मैक्यूलर फिक्सेशन जो होता है फर्स्ट 3 वीक ऑफ द लाइफ में, जो मैक्यूला होता है जिसमें हाईएस्ट विजन होता है, वो फिक्सेशन फर्स्ट 3 वीक ऑफ द लाइफ में होता है, तो वो इम्पेयर हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ निस्टैग्मस विच परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। जो है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करे, इसलिए एप्थैल्मिया न्यूनेट्रम तो बहुत ही खतरनाक है। नाउ क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, पर अभी तो क्लमाइडिया के बारे में ही पढ़े थे, ट्रैकोमा के बारे में पढ़े थे। नाउ क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, सो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस inclusion conjunctivitis manifests relatively late, usually over 1 week after birth. This is relatively common cause of ophthalmia neonatum. Examination is negative or inconsequential, but the characteristic intracellular inclusion body formed by chlamydia oculogenitalis are found. It is venereal infection यानी STD से हुआ है, derived from the cervix or urethra of the mother. Hi Shashank. Then inflammation is less severe than in the gonococcal type, but the conjunctiva may be considerably swollen. So जो inflammation severe होता है than in gonococcal type में, पर कंजंक्टाइवा जो होता है कंसिडरेबली स्वेल कर जाता है, एडिमेटस हो जाता है, एंड द डिस्चार्ज में भी पुरुलेंट। In the absence of a subconjunctival adenoid layer in children, there are no follicles that appears in contrast to the infection in adult. So complication क्या होता है? So if the disease is allowed to smolder to the chronic stage, these may develop after 3 months.
A complicating superficial keratitis occurs as a rule, and occasionally, in prolonged cases, the corneal periphery may be invaded by a pannus. If left untreated, associated systemic disease such as chlamydia, otitis, and pneumonia may persist or develop later. Other bacteria क्या है? Other bacteria such as Staphylococci, Streptococcus pneumoniae, gram-negative coliform manifests 48 to 72 hours after the birth. So herpes simplex virus infection persists 5 to 7 days after birth. ना केमिकल टॉक्सिसिटी में आ जाते हैं. In past, if maternal infection was suspected, a drop of silver nitrate solution 1% was instilled into each eye. क्रेट्स मेथड इसको कहते थे. अगर मदर का इन्फेक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते थे, उसको क्रेट्स मेथड कहते थे. केमिकल टॉक्सिसिटी यूज टू बी सीन विद इन फ्यू आवर्स ऑफ प्रोफाइलैक्टिक टॉपिकल ट्रीटमेंट with silver nitrate solution in some cases, and disappeared simultaneously in 1.5 days में. It is rarely seen nowadays as erythromycin and tetracycline eye ointment have been replaced silver nitrate for prophylactic use. Now investigation क्या है? Staining. Where diagnostic tests are not available, gram stain smear is sensitive with high positive predictive value for identifying the etiological agent of ophthalmia neonatorum. Conjunctival smear should be stained with gram and Giemsa stain. So gram negative intracellular diplococci with polymorphous leukocytes indicate Neisseria gonorrhoeae as the infective organism. Gram stained smear showing polymorphonuclear leukocyte and lymphocyte without bacteria or just the occasional bacteria. Hey guys, क्या लाइव दिख रहा है? Hi guys. Okay. Okay. So, हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, सो अगर ग्राम स्टेनिंग किए हैं और सेल के अंदर रहने वाला 2 डिप्लोकोकाई मिला पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट के साथ, तो निजेरिया गोनोरिया है इन्फेक्टेड. और ग्राम स्टेनिंग स्मीयर किए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट विथ लिम्फोसाइट अगर मिल रहा है विदाउट बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा और जस्ट ओकेशनल बैक्टीरिया सजेस्टेड क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस. अब ये वाला अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये क्लामाइडिया कंजक्टिवाइटिस इन न्यूबॉर्न है. सो ये देख सकते हैं कि क्लामाइडिया से पूरा न्यूबॉर्न कंजंक्टिवाइटिस हो गया. देन इंट्रासेल्युलर है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज दिखा फाउंड आफ्टर स्क्रेपिंग द पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा फॉलोड बाय जिम्सा स्टेनिंग. सो हाय अंकल. So then we have
Chlamydia trachomatis as the infective organism. So gram stained conjunctival smears with many bacteria. अब क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस में नो बैक्टीरिया होता है, बट अगर बहुत सारा बैक्टीरिया दिख रहा है विथ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एज इन्फेक्टिव of a bacteria infection such as Staph aureus, Staphylococcus pneumonia, Haemophilus species है. Then conjunctival scraping. Thank you. Conjunctival scraping. अब scrape किए are obtained from the chlamydial immunofluorescent antibody test and specimens sent for viral chlamydial and bacterial culture sensitivity. Now, clinical judgment in terms of clinical feature and time of onset should be used to judiciously advise relevant investigation for particular case. जैसे कि अगर बच्चा का बर्थ हुआ है और विद इन 2 days बच्चे को ऑप्थेल्मियम मतलब आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं या तो निजेरिया गोनोरिया है या केमिकल AGNO3 हो सकता है. अगर निजेरिया गोनोरिया है तो सेफ्ट्राइऑक्सोन इंजेक्शन चलाएंगे, जेंटामाइसिन ड्रॉप दे सकते हैं, बैसीट्रेसिन आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं. केमिकल AGNO3 है तो वॉश करेंगे आई को, अप्लाई करेंगे एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट एंड ऑब्जर्व यूजुअली इम्प्रूव्स विद इन 1 day. ना 2 दिन से लेके 3 दिन के बीच में हुआ है तो अदर बैक्टीरिया हुआ होगा. और फिर अदर बैक्टीरियाज में क्या दे सकते हैं, नियोमाइसिन बैसीट्रेसिन आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं, जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं. ना 5 से 7 days में अगर बच्चे को हुआ है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV2 का हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं. तो ए साइक्लोवेर 3% आई ऑइंटमेंट देना पड़ेगा. सिस्टमिक ए साइक्लोवेर फॉर systemic involvement in consultation with pediatrician. ना मोर देन 1 week हो गया है तो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं. इसमें क्या देंगे, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट एंड ओरल एरिथ्रोमाइसिन फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन देंगे. ना ट्रीटमेंट क्या होता है इन सब का. सो एज द डिजीज इज प्रिवेंटेबल, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. सो प्रोफाइलैक्सिस में क्या देंगे, एनी सस्पिशन vaginal discharge during antenatal period should be treated and meticulous obstetrics asepsis maintained at birth. The newborn baby's closed lid should be thoroughly cleansed with sterile cotton wool soaked with sterile normal saline and dried. If the mother is suspected to be infected with gonococci or chlamydia, then 1% tetracycline or erythromycin eye ointment should be applied and the eye must be carefully watched during the first week. Now, curative treatment क्या होता है? If ophthalmia neonatum is confirmed, the initial treatment is based on immediate result of gram and Giemsa staining. The treatment should be guided by the identified organism. तो हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे या जिम्सा स्टेन करेंगे और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे. द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक and mode of therapy for different organism commonly causing ophthalmia neonatum are summarized in table 11.4. वो डे के हिसाब से कि किस दिन क्या हुआ है, लाइक फॉर विद इन 2 days होगा तो निजेरिया गोनोरिया है, देन केमिकल हो सकता है. 2 से 3 days होगा तो अदर बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें नियोमाइसिन सिट्रेसिन देते हैं. 5 से 7 days में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 हो सकता है तो उसमें साइक्लोवेर देते हैं. मोर देन 1 week हो गया है तो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस D2K हो सकता है. हेलो सुनाई दे रहा है क्या? इज इट हेलो, इज इट विजिबल? ओके, so let's see.
What is penicillinase producing Neisseria gonorrhoeae is treated with single intramuscular injection of either ceftriaxone 125 mg or cefotaxime 50 mg per kg IV or IM in 3 divided doses of kanamycin 25 mg per kg body weight. Local treatment consists of instilling gentamicin 0.3% drops in both eyes, repeated in 15 minutes, and then after every feed for 3 days along with bacitracin eye ointment 2 to 4 hourly. Then ophthalmia then chlamydial ophthalmia is treated with a suspicion of erythromycin ethyl succinate 50 mg per kg daily in 4 divided doses before feed for 2 to 3 weeks of azithromycin 10 mg per kg for 3 days. Local treatment is with chlor tetracycline 1% and erythromycin eye ointment after feeds. In all cases, both parents must receive appropriate treatment for genital infection. Now, bacteria ophthalmia, other than gonococcal or chlamydia, is treated locally with neomycin bacitracin ointment after the feed on both eyes. Once the sensitivity test is done, the antibiotic may be changed if required, and the duration of treatment uh, depends upon the response. However, conjunctivitis due to chlamydia trachomatis persists as it is not affected by neomycin. हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में क्या देंगे? वायरल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट विडरेबीन विडरेबीन जो होता है 3% या फिर एसाइक्लोविर 3% आई ऑइंटमेंट इज यूज्ड 5 times a day and then 3 times a day till the resolution. Systemic acyclovir is recommended for systemic involvement after pediatric consultation. Now we have chemical toxicity is suspected. No treatment is needed as it is self-resolving. All affected babies must be reevaluated daily for the first 2 to 3 days after repeated culture taken if required. नॉन इन्फेक्शियस कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है? सो बेसिकली अब हम लोग आ गए हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की तरफ. तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस क्यों हो रहा है? बॉडी का रिस्पॉन्स है. हे फीवर हो गया है. सो एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द कंजंक्टिवाइटिस एज्यूम सेवरल फॉर्म्स. तो सीजनल एलर्जिक या फिर हे फीवर कंजंक्टिवाइटिस हो गया है पेशेंट को, या पेरिनियल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, वर्नल कंजंक्टिवाइटिस, वर्नल कैटराह जिसको कहते हैं, या फिर केराटो कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है, एटोपिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, या जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, या फिल फिल्टेन्युलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस, या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटो केराटो कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है पेशेंट को. ये सारे एलर्जिक कंडीशन. तो ईटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू पोलन एंड अदर. सो हाइपर सेंसिटिविटी सबका लिखना है कि कौन से टाइप का है. पोलन या फिर अदर एटमॉस्फेरिक एक्सोजीनियस एलर्जेंस मीडिएटेड बाय आईजीई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑल्दो अदर प्रोफाइल pathophysiological mechanism involved in the inflammatory cascade also contribute. Sometimes the allergen is bacterial protein of endogenous nature. The most common being staphylococcal infection in the nasal cavity, upper respiratory tract. A more characteristic picture is due to exogenous protein in which the conjunctivitis may form part of typical hay fever, and elevated IgE levels are demonstrated in the plasma and tear. Contact with animal, horses, cats, pollen or
सर्टेन फ्लावर्स जैसे कि प्रीम्यूला are other frequent causes. Some chemicals, cosmetic, and eyelashes dye causes severe conjunctivitis and dermatitis. Now, drugs applied locally to the conjunctiva is uh, susceptible person may cause a typical allergic reaction of this type. It may sometimes be violent, almost erysipetalous, spreading widely over the lids and face. The most typical picture of an acute reaction is that of atropine or बेरीमोनिडीन एलर्जी. एट्रोपिन या बेरीमिडोन एलर्जी होता है, उससे बहुत ज़्यादा acute रिएक्शन देखने को मिलता है. While other drugs tends to produce a more chronic response characterized by follicle formation. Now we have symptoms. So itching is prominent symptom. कोई भी एलर्जी होता है उसका प्रोमिनेंट फीचर क्या होता है, तो हम लोग आँख बंद करके बोल सकते हैं इचिंग, क्योंकि एलर्जी में इचिंग होता ही होता है. ठीक है. Oh my god, what is this? Okay, so let's see ahead. आगे बढ़ते हैं. सो ये सब होता है. तो इचिंग जो होता है ना, किसी भी तुम अपना वीडियो देखो. इचिंग जो होता है ना, वो किसी भी एलर्जी का मोस्ट प्रोमिनेंट एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि इचिंग हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज़ एन एलर्जी. ठीक है. So itching is a prominent symptom and redness, watery secretion which is not purulent and whitish ropey discharge. So इसमें क्या होता है, एलर्जी का एक और क्या होगा कि whitish ropey discharge मिलेगा. Are characteristic. Some patients are symptomatic periodically, जैसे seasonal allergic conjunctivitis या hay fever conjunctivitis. इन अदर्स थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि पेरिनियल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, जैसे कि पूरे साल जो कि एलर्जी जिनको होता है उसको पेरिनियल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है. और किन्हीं किन्हीं को सीजनल होता है, उनको कहेंगे हे फीवर कंजंक्टिवाइटिस या फिर सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस.
सो साइंस क्या होता है कंजंक्टिवाइटिस का? सो दीज इंक्लूड रेडनेस, लैक्रिमेशन, रेडनेस हो जाएगा, आँख, आंसू निकलने लगेगा। देन पैपिलरी हाइपरप्लेशिया, सो एलर्जी में पैपिलरी होता है, इसमें फॉलिकल उलिकल नहीं होता है। पैपिलरी हाइपरप्लेशिया ऑफ द टार्सल कंजंक्टाइवा, लिड का स्वेलिंग हो जाएगा। क्रॉनिक केसेस में डेवलप अ मडी डिस्कलरेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा, ड्राई आई, secondary changes in the cornea such as vascularization and features of keratoconus. Now treatment क्या होता है? Elimination of allergens. So locally treatment is removal of the allergen from environment. Allergen को ही हटा दो. If this cannot be done, desensitization may be attempted by a long course of injection. Temporary relief may be obtained by decongestant eye drops जैसे कि नेफ्राजोलिन, एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जैसे कि एंटाजोलिन, एजिलास्टीन या फिर क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेम क्लोरफेनेरामीन एंटीहिस्टामिन है। सो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। हेलो शशांक, शशांक तुम क्या देख रहे हो क्या? हेलो शशांक, तुम्हारे पास क्या रॉ चाउमीन होगा क्या? अच्छा ठीक है। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या फिर ओलोपेटाडीन, बेपोटास्टिडीन, कीटोटिफिन, ये सब मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, ये सब यूज़ होता है। अ शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉयड ड्रॉप्स फ्रीक्वेंटली bring relief in severe cases which do not respond to topical use of the anti-allergic agents listed above. तो एंटी एलर्जी, अगर एलर्जी है तो कॉर्टिकोस्टीरॉयड भी दे सकते हैं। इससे क्या करेगा कि स्टीरॉयड हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम कर देगा, तो एलर्जी जो है वो कम हो जाएगा। Wait a second, I'm coming in 1 minute. Okay, guys, wait a second. I have some work, so I'm gonna do that. Hi, guys, welcome. I'm Miss. Oh, sorry. I'm really sorry. So, is it audible? I guess it must be audible. Audible and visible. So, let's see. Vernal conjunctivitis. So, it is a form of allergic conjunctivitis. Vernal keratoconjunctivitis, vernal or spring cataract. So, brief discussion, course and prognosis.
दिस इज रिकरेंट बाइलैटरल, बार बार होने वाला बाइलैटरल अकरिंग विथ द ऑनसेट ऑफ हॉट वेदर। जैसे ही मौसम गर्म होता है तो फिर वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट को हो जाता है। केराटो क्यों? क्योंकि ये कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर रहा है। Therefore, rather a summer than a spring complaint। समर में अगर ये लेके आए हैं तो हम लोग एलर्जिक मान सकते हैं। एंड फाउंड इन यंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, यूजुअली बॉयज़ प्रिडोमिनेंस है। सो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ पंक्टेट एपिथेलियोपैथी। शील्ड अल्सर, इसमें शील्ड अल्सर होता है। अगर कोई पूछेगा शील्ड अल्सर किस में होता है तो क्या बोलेंगे? वर्नल कंजंक्टिवाइटिस में होता है एंड सेकेंडरी केराटोकोनस में। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज विजिबल वेरिएबल। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस वेरिएबल होता है। चिल्ड्रन यूजुअली हैव अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज एंड इवेंचुअली grow out of the disease over a period of 5 to 10 years. Some young adults develop more severe manifestation of the disease, sometimes with indefinite recurrence. इनडेफिनेटली उनका होते रहता है वेनरल केराटोकंजक्टिवाइटिस। सिम्टम्स क्या होता है? बर्निंग, इचिंग, सम फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन आर चीफ सिम्टम्स। सो साइंस क्या होता है? टू टिपिकल फॉर्म्स आर सीन। पहला पैल्पेब्रल फॉर्म और दूसरा लिम्बल या फिर बर्बर फॉर्म। दिस इज द पैल्पेब्रल फॉर्म जो कि पैल्पेब्रल कंजंक्टिवाइटिस में हुआ है। दिस इज द बल्बर फॉर्म जो कि बल्बर कंजंक्टिवाइटिस में हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग। ओ माय गॉड। ठीक है, तो दो फॉर्म होता है, पैल्पेब्रल एंड बल्बर। ओके, ना हम लोग आगे देख लेते हैं। सो द पैल्पेब्रल फॉर्म इज easily recognized। ठीक है, on everting the upper lid, palpebral conjunctiva is seen to be hypertrophied and mapped out into polygonal raised areas, not unlike cobblestone. The color is bluish white, lime milk, and this appearance may also be seen over the lower palpebral conjunctiva. The flat topped nodules are hard, consist chiefly of dense fibrous tissue, but the epithelium over them is thickened, giving rise to milky hue. Now histologically they are hypertrophied papillae। ये पैपिले हैं सारे, hypertrophied papillae, not follicles। eosinophilic leukocytes are present in them in great number and found in secretion। In addition, infiltration with lymphocyte plasma cell
Macrophages, basophils, eosinophils may be seen. Palpebral form cannot be mistaken if typical but may resemble trachoma. The type of patient, the milky hue, freedom of the fornix from the implication and the characteristic recurrence in hot weather will usually prevent misdiagnosis. क्या क्या तो टाइप ऑफ पेशेंट फर्स्ट क्या होते हैं टाइप ऑफ पेशेंट बॉयज़ होते हैं और यंग होते हैं दूसरा मिल्की ह्यू तीसरा फ्रीडम ऑफ द फॉर्निक फ्रॉम इम्प्लीकेशन चौथा क्या है कैरेक्टरिस्टिक रिकरेंस इन हॉट वेदर नाउ लिम्बल या फिर बल्बर फॉर्म जो होता है इस रिकॉग्नाइज बाय ओपेसिटी ये होता है बल्बर फॉर्म दिस इज द बल्बर फॉर्म सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय opacities of the limbus का opacity and with nodules or a wall of gelatinous thickening at the limbus नोड्यूल या जिलेटिनियस थिकनिंग बन जाता है लिम्बस में वाइट डॉट्स ऑफ eosinophils and epithelial debris known as Horner Horner Trantus dot. If seen at the limbus are very characteristic feature. कौन सा डॉट तो हॉर्नर ट्रंटास नाउ वी हैव मिक्स्ड फॉर्म सो बल्बर भी इन्वॉल्व किया है पैल्पेब्रल भी so both may occur together both type of complicate both type are complicated by a fine diffuse superficial punctate keratitis the ultimate prognosis is generally good with the disease being usually self limited over a period of a few years however in some individuals the disease is more severe with recurrence for several years with development of severe dry eye and corneal ulcer shield ulcer ठीक है बार बार जिनको severe होता है with scarring corneal ulcer यानी shield ulcer हो जाएगा उनको with scarring ठीक है occasionally some thickening and discoloration of the conjunctiva may be seen may remain ट्रीटमेंट क्या है दिस इज़ प्योरली सिम्टोमेटिक जो जो सिम्टम दिख रहा है सिम्टम को ठीक करो पहला क्या है टॉपिकल थेरेपी सो आई ड्रॉप कंटेनिंग एंटी हिस्टामीन एंटीहिस्टामिनिक्स मास्ट सेल स्टेबलाइजर डीकंजेस्टेंट प्रिवेंटिव free lubrication anti-inflammatory agents such as non-steroid NSAID mild acting steroid topical cyclosporin are useful to control the allergic reaction and consequent inflammation acetylcysteine as 10% or 20% drops wait I'm coming in a second
Okay, guys. Hi, guys. Let's move ahead. आगे पढ़ते हैं. इसमें जो स्कार शील्ड अल्सर बन जाता है एंड स्कारिंग भी हो सकता है. So treatment basically depends upon symptom. Then acetylcysteine they देंगे 10 से 20% drops 2 to 3 times a day for 1 to 2 weeks is useful in controlling excess mucus. Then medications are prescribed in step ladder approach using minimum medications to start with and adding more depending upon the response. Now treatment is titrated to the response and tapered off to a maintenance dose. Side effect of chronic use of steroid have been watched for and avoided. Tacrolimus, tacrolimus 0.1% and or 3% applied over the lids. It now emerges as useful agent that can reduce the dependence of topical steroid. ना लोकल थेरेपी क्या होता है तो सब टार्सल इंजेक्शन फॉर लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड बहुत लंबे समय तक एक्ट करने वाले स्टीरॉयड को सब टार्सल इंजेक्शन की तरह देंगे जैसे सच एज ट्राइएमसिनोलोन may be required for severe refractory cases. Cryotherapy to the tarsal conjunctiva is sometimes needed to control giant papillae. Surgical treatment. Surgical excision of giant papillae may be required. Shield ulcer can be treated with debridement of the surface and application of amniotic membrane or a bandage contact lens to promote healing. Systemic therapy क्या है? Oral anti-allergic medication can be used for a short while in severe bilateral cases with severe symptoms, especially itching. Not easily relieved with topical treatment. Chronic cases with secondary mucin deficient dry eyes can be benefited by oral treatment with nutritional supplements containing omega 3 fatty acid. How many more pages are there? Then just the conjunctiva is very big. उसके बाद मेरा cornea शुरू होगा. Then the cornea is very big. Today I'll do cornea और उसके बाद वीडियो में मैं उस लेंस को ख़त्म कर लूँगी. Cornea is very big. At least half I'll do cornea. इतना तक.
सो सपोर्टिव थेरेपी क्या है, कोल्ड कंप्रेशन देंगे एलर्जी वाले केसेस में, एंड tinted glasses are helpful and provide considerable comfort as the symptoms and signs subside. Topical steroid can be tapered off, कम कर देंगे, and discontinued, and mast cell stabilizers को continue करेंगे. Now, chronic steroid uses push the patient at serious risk of silently developing steroid-induced glaucoma हो सकता है पेशेंट को, इसलिए लंबे समय तक स्टीरॉयड नहीं देना है पेशेंट को. और बैक्टीरियल या फिर फंगल कॉर्नियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, विच आर ऑल पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन. Hence, steroids should be used only for short period under the careful supervision of ophthalmologists, and indiscriminate use of steroid, particularly self-medication by patient or the parent in the case of children, is to be actively discouraged. The patient should be uh, dissuaded from rubbing the eye as it further induces mast cell degranulation, which, with the release of histamine, setting up a vicious cycle. Then, also, chronic rubbing of the eye is believed to predispose the patient to development of keratoconus. रबिंग से केराटोकोनस हो जाता है, एंड प्रेसिपिटेट acute हाई ड्रॉप्स. नाउ एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस देख लेते हैं. हमारा क्या कंप्लीट हो गया, वेनरल केराटोकंजक्टिवाइटिस कंप्लीट हो गया. अब एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, केराटो क्यों है, क्योंकि कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें. एटोपिक है. इट इज़ जनरली सीन इन यंग अडल्ट, ये भी यंग अडल्ट में, वो भी यंग अडल्ट में था, एंड ऑफन एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ अदर एटोपिक डिजीजेस सच एज अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस इन पेशेंट्स और हिज और हर फैमिली. सो मेरा ना यहाँ पे ना कुछ ड्राइनेस या समथिंग हो रहा था. देन आई स्टार्टेड ईटिंग एंटी हिस्टामिन, और मेरा ड्राइनेस जो है वो ऑलमोस्ट अब जा रहा है, एंड माई हैंड इज़ बिकमिंग ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल. ये देखो, ये नॉर्मल है, एंड दिस इज़ लाइक द ड्राइनेस दैट आई हैव, बट इट इज़ रीगेनिंग इट्स स्किन बैक, एंड इट इज़ बिकमिंग मच बेटर. ये सब कंडीशन से एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा लायबल है इन द पेशेंट और हिज और हर फैमिली. It is responsible for an extremely severe and chronic form of ocular surface disorder. Although the disease spectrum varies in range of severity from mild to chronic persistent inflammation, it is similar in nature to VKC, except that it tends to be more severe, chronic, and extends into adulthood. सो जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस देख लेते हैं. वेल ये सारा एंडोजीनस था क्या, नहीं, ये सारा नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज के अंदर था. देन जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस देख लेते हैं. सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलर्जिक इन्फ्लामेशन अफेक्टिंग द सुपीरियर टार्सल कंजंक्टाइवा. ठीक है, कंजंक्टाइवा का सुपीरियर टार्सल को अफेक्ट करता है. इटियोलॉजी क्या, इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू सॉफ्ट हाइड्रोफिलिक कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से होता है यूज़. प्रोट्रूडिंग सूचर एंड्स, और या फिर ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस की वजह से होता है. इट कैन ऑल्सो अकर रेयरली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस यूज़. ठीक है. Then we have the underlying mechanism is hypersensitivity reaction type 1 and 4. Now symptoms क्या होता है, the usual symptoms are itching होगा, watering होगा, foreign body sensation होगा, occasionally blurring of the vision होगा. Signs क्या है, तो signs include conjunctival congestion which is predominantly in the upper palpebral region. कंजंक्टाइवा जो है वो कंजस्टेड होगा जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस में.
कंजंक्टाइवा जो है वो कंजस्टेड हो जाएगा, अपर पैल्पेब्रल रीजन में सबसे ज़्यादा होगा, विथ लार्ज पॉलीगोनल पैपिला। पैपिला कैसा होगा? लार्ज पॉलीगोनल ऑन द सुपीरियर टार्सल कंजंक्टाइवा। नाउ मैक्रो पैपिला आर 0.3 से 1 mm इन साइज एंड जाइंट पैपिला आर 1 से 2 mm इन साइज। इसमें जो पैपिला होगा 1 से 2 mm इन साइज होगा, ठीक है। नाउ वी हैव मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस का? सो ट्रीटमेंट इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर सच एज डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस को छोड़ दो, रिमूवल ऑफ offending suture, cleaning and polishing of any ocular prosthesis, and replacing it with one coated with compatible materials such as bicoat. Useful ancillary therapy includes mast cell stabilizers, cromolyn sodium 6 hourly, olopetrodin 12 hourly, or befotacine 12 hourly, along with artificial tear, antihistamine drops, and decongestants. So, topical steroid can be administered for a short while, and a subtarsal injection for long acting steroid may be needed in severe cases provided that the patient is not a steroid responder. So, अब हम लोग एंडोजीनियस और इम्यून सिस्टम मीडिएटेड कंजक्टिवाइटिस पढ़ लेते हैं। ये कितने तरीके का है? एंडोजीनियस यानी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो कंजंक्टिवाइटिस पैदा कर रहा है, ठीक है। वो एक्सोजीनियस था, ये सब जो कॉन्टैक्ट लेंस से या एलर्जेंस से या एटोपिक अगर है तो हो गया, ये सब एक्सोजीनियस हुआ ना, ये बाहर से इंड्यूस हो रहा है ना। अब एंडोजीनियस अपना बॉडी खुद ही इंड्यूस करेगा। सो ये एक दो फिर नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। तीन तीन तरीके का होता है। सो एंडोजीनियस या फिर इम्यून सिस्टम मीडिएटेड कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस अकरिंग प्राइमरी बिकॉज ऑफ एन एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड inflammation including various types of allergic conjunctivitis, drug reaction, and autoimmune diseases known to affect the mucous membrane. Specific types are briefly described as follows. So फाइक्टेन्यूलर कंजंक्टिवाइटिस पहला होता है, फाइक्टेन्यूलर कंजंक्टिवाइटिस। सो इन फाइक्टेन्यूलर कंजंक्टिवाइटिस वन और मोर स्मॉल राउंड ग्रे और येलो नोड्यूल्स slightly raised above the surface are seen on the bulbar conjunctiva, generally at or near the limbus. So हम लोग देख सकते हैं दिस इज फाइक्टेन्यूलर कंजंक्टिवाइटिस, ये हम लोग देख सकते हैं नोड्यूल है नियर द लिम्बस, ठीक है। They rarely occur on the palpebral conjunctiva. So palpebral conjunctiva में rarely occur होता है, and the congestion of the vessels is limited to the area around the phylactens. Phylactens जो है उसी के around congestions दिख रहा है हमें। The disease may be complicated by mucopurulent conjunctivitis, in which the whole conjunctiva is intensely reddened. Now, there is a considerable evidence that fiectennular conjunctivitis is an allergic condition caused by
endogenous bacterial protein, which in most cases are tuberculous, but in other cases may be derived from mild, long standing infections such as those of the tonsils or adenoids. The condition used to be common but is rare nowadays, a change that may in some degree be due to improved hygiene and the control of tuberculosis. However, it is still seen in populations where tuberculosis is still widely prevalent. Now, phyllectins resembles blebs and shows a true vesicular stage show करता है. There may be very small, they may be very small, so can be seen with difficulty, but usually measures approximately 1 millimeter in diameter. The latter stage, the epithelium over the surface becomes necrotic and small ulcers are formed on the conjunctiva. There is a little consequence because healing takes place rapidly without the formation of a scar. But when it occurs on the cornea, as is very frequently the case, it is much more serious. See phyllectinular keratitis in chapter 12. Basically इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे फाइलेक्टेन्युलर केराटाइटिस. ठीक है, जब ये कॉर्निया में फाइलेक्ट्यूनर हो जाएगा तब. अगर कंजंक्टाइवा में होता है बिना स्कार के हील कर जाता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर जब कॉर्निया में होगा तो बहुत ड्रामेटिक हो जाएगा. Now, simple phyllectular conjunctivitis has few symptoms. There is some discomfort, irritation associated with relaxed lacrimation. Now, if there is no mucopurulent discharge, the cornea is not involved. There is little or no photophobia. Now, if the condition persists, corneal spread is rule, and then is marked intensification of the symptoms, particularly from the phyllectins. So, क्या होता है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगेगा, फोटोफोबिया होने लगेगा जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. नाउ particularly from phyllectins lying astride the limbus. Now, treatment क्या है? Simple phyllectinular conjunctivitis is usually readily amenable to treatment, which must be both local and general. Steroid given as drops or ointment usually have dramatic effect. If there is any corneal complication or evidence of its immense, antibiotic or cycloplegics are added. Dark glasses or shades may be used. Now we have conjunctivitis associated with systemic disorder. A number of syndromes related to erythema multiforme affects the conjunctiva in association with other mucous membrane such as those of the mouth, nose, urethra, vulva. So what happens is a number of syndromes related to erythema multiforme affects the conjunctiva. So erythema ये अभी हम लोग पढ़ क्या रहे, कंजंक्टाइवा एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक डिसऑर्डर. सो बेसिकली सिस्टमिक डिसऑर्डर हुआ है, बॉडी में कोई डिसऑर्डर हुआ है, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है. सो नंबर ऑफ सिंड्रोम्स रिलेटेड टू एरिथमा मल्टीफॉर्मी अफेक्टेड द
affects the conjunctiva in association with other mucous membranes such as those of the mouth, nose, urethra, and vulva, as well as eruptions on the skin associated with general toxic symptoms, sometimes is considerable severity. Sometimes of considerable severity. The conjunctivitis may be mild but is sometimes severe when the condition is often known as Stevens Johnson syndrome. It may be pseudomembranous or vesicular, or blindness may result from corneal complications. corneal complications से blindness, अच्छा कॉर्निया बोल रहा है. The disease is an immune vasculitis precipitated by the deposition of circulating antigen complex with complementary fixing antibodies. So in Rettes disease में क्या होता है? Acute conjunctivitis, catarrhal or purulent is associated with urethritis, polyarthritis, keratitis and uveitis, sometimes with क्या क्या होता है? यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन, पॉलीअर्थराइटिस बहुत सारे बोन्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, केराटाइटिस कॉर्निया का इन्फ्लामेशन, यूविया का इन्फ्लामेशन एंड समटाइम्स विथ हाइपोपायन एंड occasionally occur. The conjunctivitis associated with Beckett's disease is usually mild. Treatment of all these conditions is unsatisfactory, and corticosteroid and broad spectrum antibiotics do not give consistent result. The formation of symblepharon is to be vigorously avoided, and intensive lubricant therapy with artificial tear maintain lifelong. ठीक है. Now sarcoidosis. बहुत सारा बाकी है. Now we have sarcoidosis. So patient affected with sarcoidosis not infrequently shows lesion in the conjunctiva. These lesions are typically nodular, translucent, orange in appearance, usually located in the folds of the lower fornix. They are sometimes large and confluent. Diagnosis is by biopsy. Treatment is of general condition. Ocular cicatricial pemphigoid. So ये क्या होता है? Previously sometimes referred to as benign mucoid membranous pemphigoid. This is a rare but very serious disease of unknown origin affecting both eye. It generally affects those older than 50 years and is of insidious onset with remission and exacerbation. There is a loss of hemidesmosal attachment of the epithelium of the basement membrane. Symptoms include foreign body sensation, redness, watering, and photophobia. Now signs क्या होता है? Vesicles occur on the conjunctiva but more commonly greyish white membrane patches are seen. Dinner? No dinner. No, I'm not going to do dinner or anything. So guys, just wait for me for some minutes.
Noodles. Noodles. Okay, let me just end it.